who wanted to write. तो ये जर्नलिज्म और राइटिंग से एक्टिंग तक आप कैसे पहुंची? Probably because I wanted something that was ज़्यादा involved, you know, as a person, as a human being. हाँ. Writing is great. It's a very intellectually involving pursuit. लेकिन उसके लिए you need a lot of like पढ़ंत as well, like पढ़ाई होनी चाहिए आपका एक, you know, एक वो होना चाहिए, knowledge base ज़्यादा होनी चाहिए. So I would definitely write, maybe sometime later. I think maybe once I'm like old. हाँ. तब मैं लिख लूँगी. हाँ, पोस्ट रिटायरमेंट प्लान है राइटिंग का? Yeah, I think फिर वो उस वक्त जो है वो आपको एक आपका पर्सपेक्टिव भी सोसाइटी का डिफरेंट होता है, एंड आपके पास जो है वो बहुत सारी एक सालों की विजडम होती है, तो वो एंड ऑल्सो अभी बिजी विद एक्टिंग एज वेल. तो एक्टिंग इसलिए मुझे लगा अच्छा क्योंकि इट वाज वेरी एंगेजिंग, mentally, emotionally, physically, spiritually, intellectually as well. Like there is a lot more to do with it. Interesting. Spiritually. Yeah, definitely, because when I think of a character, तो मैं सोचती हूँ ना कि अंदर से कैसे हैं, how's their heart, how's their psyche, how and why they behave and like talk a certain way. So अपने दिमाग में मैं वो सब कुछ सोचती हूँ. So आप पूरा उसका आर्क बनाते हो, पूरा उसका. But you study journalism. Yeah. और आप you went to Malaysia. Yeah. वैसे you're settled in Karachi. Yeah. तो how did you end up in Malaysia? I was studying here pehle for my undergrad, and I was studying social sciences. It had like political studies, sociology, gender studies. Okay. So I became a bit of a rebellious kid, and I had a lot of like questions and like issues with the societal norms and beliefs that we engage in. तो वो मैं थोड़ा सा वो सवाल जवाब वाले मोड में चल रही थी. सो दे डिडंट लाइक इट, लाइक माय फैमिली, दे लाइक ये ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा कुछ और पढ़ने चले जाओ. हाँ, लेकिन यार ये बड़े मजे की बात है कि उन्होंने सोचा ज़्यादा हो गया. ये नहीं कहा कि कॉलेज से निकाल के घर बिठा के शादी करो. उन्होंने कहा यहाँ से निकाल के बाहर भेज दो. ये सोचा था. हाँ. ये भी सोचा था उन्होंने, लेकिन माय मॉम वाज लाइक नहीं, ये नहीं. माय मॉम टुक अ स्टैंड उस वक्त के नहीं, पढ़ना तो है, शी नीड्स टू. And if not this, and if she's becoming like a too much of a rebel or a critical thinker, तो फिर सही है, कुछ और कर लेगी. तो कुछ और कर लिया, जिससे और भी ज्यादा हो गया सब कुछ, कम कुछ नहीं. मैं वही सोच रही हूँ कि बाहर एक लड़की अकेली जाए पढ़ने, तो वो मतलब है कि धीमी होके तो नहीं वापस आएगी. और फिर आप एक्सपोज हो जाते हैं पूरा होल न्यू वर्ल्ड से, जहाँ पे प्रोग्रेस बहुत ज्यादा है यहाँ से वैसे. तो मतलब आप क्या ही सोच रहे हैं? क्या आप सोच रहे थे? अब तो मतलब इंतहा हो गई है रिबेलियन और एम्पावरमेंट की. अच्छी बात है, अच्छी बात है. खैर आप वो पढ़ के वापस आई. And then you worked here for a while? I worked here in a couple of different fields. तो इवेंट मैनेजमेंट, थोड़ा सा मॉडलिंग भी, एडवर्टाइजिंग भी, लेकिन वो मज़ा नहीं आया. फिर आई वेंट बैक एंड आई वर्कड इन द आईटी इंडस्ट्री. ओके. इन शोटेक की कंपनी थी. इट वाज अ जर्मन कंपनी, रियली लाइक कटिंग एज वाला सीन था. आई वाज मैनेजिंग देयर वेबसाइट कंटेंट एंड देयर सोशल मीडिया कंटेंट. मज़ा आया उसमें. आई स्टक आउट फॉर लाइक अ ईयर एंड अ हाफ. उसके बाद मुझसे नहीं हुआ. उसके बाद आई वांटेड लाइक, because I always had arts with me. A levels में I also took it. तो वो एक side भी है. And then I was very like, with acting also I try this कि कुछ socially responsible चीजें हों. So like I was also socially interested. I wanted to work in social welfare. If not journalism नहीं होता तो फिर मैं वो ही करती. तो I wanted to एक तो come back and I wanted to do something creative. Right. So that's how I came towards acting. मुझे interest develop हुआ था. I saw this character on TV. Not sure what drama it was, but it was this strong-headed girl who wanted to make it work in the world, and she had a lot of hurdles. Similar background as well, middle class-ish. So I could relate to it. I was like, मुझे ये करना है. ये करना है. हम बात कर रहे थे, maybe it was जिंदगी गुलजार है. Yeah, maybe. I think it was for me like a later watch for it, because this was around 2016-ish. और 2017 गुलजार से पहले आया था, मगर आपने देखा शायद उस वक्त. तो हाँ, मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे ही देखा. I was in my office, I remember watching it on my desk. And then थोड़ी दिनों तक मैंने वो प्रोसेस किया. And then one day I was just like, I can't do this, I can't do this, I need to go back. I ran out to the balcony and I was like, okay, what do I do, how do I do it? Because
obviously working in a foreign country you get a work permit and you have to stick it out if it's like, because they pay a lot of money to process that work permit for you. साल रिव्यू होता है, तो वो आधा साल हुआ था, it was July. But and then they were so nice because they were like कि नहीं आप जाएं, आप पाकिस्तान से रिमोटली काम कीजिएगा, try out this stint with acting, अगर नहीं किया तो वापस आ जाएगा, हम यही हैं. तो फिर मैं चली गई, आ गई. और वापस नहीं गई. December में I finished my year. They even let me keep the laptop. It was a super cool like yoga laptop. या अल्लाह ऐसे सबको दे employees. बाहर वाले यार, I mean tech industry is already like a very booming. Absolutely. उनके लिए it's nothing. It's nothing. So that was but a good experience, but very. Made you restless and वो आपकी एक satisfaction नहीं हो रही थी, gratification नहीं हो रही थी, creative. Fulfillment नहीं थी. तो वापस आए and then your Bakhtavar was your first play, right? But you came back and you went to Napa. Yeah, I went to Napa. I did their 3-year theatre course. Why did you think it was important to go to Napa? Well, for me उस वक्त तो सिर्फ ये था that I just didn't know how to start. ठीक है. I didn't know anything. I think I wasn't very like stage comfortable as well. Like I'm not very extroverted or like animated as a person. अब I'm थोड़ा और भी खुल गए because you know in the field and. तो fidgety हो. थोड़ी सी. खुद ही कहा है, मैंने नहीं कहा. You said. I can't sit in one posture for too long. वैसा वाला. So so I was like I don't know how to do it and I didn't have that self confidence as well कि बस मैं ऐसे ही कुछ शुरू कर दूँ, कुछ पता ही नहीं था. So I was like let's start with this. They'll teach me some things as well and फिर देखते हैं, एक जर्नी शुरू होती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है. Good. I think it was a good decision. Yeah, it turned out pretty well. What does one learn at Napa? मतलब काफी लोग Napa से आते हैं और उनमें एक certain level of polish होती है as an actor. तो क्या मतलब what exactly do they bring out the actor in you? Is it a skill that can be taught? What do you learn at Napa? You learn a lot, like so basically to do different characters and to come off as like actual different peoples. Like people can believe कि हाँ ये एक अलग character है और ये एक अलग character है, and it's not this actor just doing personality acting. They are actually morphing into some different. It can still have some you know semblance of you, लेकिन आप एक अलग कैरेक्टर दिखें, थोड़ा सा बोल डिफरेंट रहे, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, इमोशंस डिफरेंट है. तो उसके लिए आपको अपने आप से बाहर निकलना पड़ता है ना, आपकी पैटर्न से बाहर निकलना पड़ता है. जिस तरह आप बोलते हैं, आप सोचते हैं, चलते हैं, सब कुछ उसको चेंज करना पड़ता है. दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू. मुश्किल काम है. दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू. तो वो आप जो है वो ट्रेनिंग से वो टूटता है. पहले आपको जो आपके जैसे मैं जिस तरह से बोलती थी, इट वाजंट वेरी साफ उर्दू एंड इट हैड इट्स ओन रिदम. एक होता है ना किसी का, जैसे हर एथनिसिटी का अपना एक रिदम है, एक्सेंट भी नहीं, सिर्फ रिदम, वो भी एक था. तो उसको आप क्लीन करना पड़ता है पहले, आप न्यूट्रल करते हैं अपने आप को, इमोशनली भी, स्पीच में भी, हर चीज में. फिर उसके बाद आप सीखते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग स्टाइल्स कैसे बनाने हैं और उनको किस तरह से बिलीवेबल भी करना है. तो वो सब एक डेफिनेटली. एंड यू हैड सम वेरी गुड प्रोफेसर्स आई बिलीव नापा में. तो क्या किनके साथ मजा आता था काम करने का? सबके साथ. If I didn't have to work, I would just keep doing this course, this degree or just theater like again and again. करते रहो, इतना मजा आता है. मजा आता था. And you did do theater, right? हाँ, theater आपने किया. जी, अभी recently I did with Zia Saab. A lot of people from Karachi actually showed up, and it was Romeo and Juliet. So obviously people know the story, they resonate. So it was very nice, very, very nice. It was just a few months before his passing as well. It was a great opportunity. तो थिएटर क्यों नहीं चल रहा हमारे मुल्क में? I think उसको sustainable बनाया नहीं गया है और थोड़ा मुश्किल भी है बनाना, और इतने लोग भी नहीं हैं जो कि उस तरह से करें, जो एक प्रॉपर थिएटर होता है, जो इट्स रियलिज्म या फिर समथिंग दैट्स नॉट जस्ट स्किट और लाइक स्केच टाइप, कॉमेडी स्केच वाला नहीं, एक प्रॉपर विद बिग प्ले राइट्स का काम हो, या इवन मॉडर्न प्लेज हो, इवन लोकल राइटर्स के भी हों. इतने लोग नहीं है उसमें, फिर वो सस्टेनेबल इतना नहीं हुआ है, और अवेयरनेस भी नहीं है कि आए लोग, उसकी मार्केटिंग वगैरह सब कुछ अगर बने तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. और आजकल जो बिक रहा है सबसे ज्यादा तो सनसनी बिकती है. तो आई थिंक थिएटर में तो कोई ऐसी सनसनी नहीं होती. सनसनी वाले थिएटर चलते हैं सबसे ज्यादा वही चलते हैं. बिल्कुल.